Nandana Vajajana Nandana Vajajana Yamuna Tira Yamuna Tira Hari Your Hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, follow, Jose. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna. Go! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Nitai Gaur Hariva, Nitai Gaur Hariva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaur Vimanande, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. We put the verse on the board. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, chapter 9, verse number 21. Tatam bhukvam sarvaloki vishalam Shine purne martya loka vishanti Evam trayam dharmam anuprapana Kathagatam kama kama labhante Tetam bhuktvam sarvaloka vishalam Shine purne martya loka vishanti Shine punne martya lokam vishanti Evam trayam dharmam anuprapana Evam trayi dharmam abnu prapanna Gata gatam kama kama labhante Gata gatam kama kama labhante Tetam bhukva sarvalokam vishalam Tetam bhuktva swarga lokam vishalam Shine purna martya lokam vishanti Shine punne martya lokam vishanti Evam trayam dharma anuprapana Evam trayi dharmam anu prapanna Gathagatam kama kama lambante Gata gatam kama kama labhante तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् Tetam bhuktva swarga lokam vishalam क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति Shine punne martya lokam vishanti एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना Evam trayi dharmanu prapanna गतागतं काम कामा लभन्ते Gata gatam kama kama labhante Ladies. Tetam bhuktva swarga lokam vishalam
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्मो प्रपन्ना गतागतं काम कामालभन्ते Te. ते ते वे तम उसको भुक्त्वा भोग करके स्वर्गलोकम स्वर्ग को विशालम विस्तृत क्षीणे समाप्त हो जाने पर पुण्य पुण्य कर्मों के फल मर्त्यलोकम मृत्युलोक में विशंति नीचे गिरते हैं एवं इस प्रकार त्रयी तीनों वेदों के धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्ना पालन करने वाले गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को काम कामा इंद्रिय सुख चाहने वाले लभंते प्राप्त करते हैं. When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure, and the results of pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. अनुवाद. इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं. इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है. तात्पर्य. जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो भी इसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता. पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है. जन्मादि अस्यतः. जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता. वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है. सारांश यह है कि वह स्वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है. अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं पड़े होगा. Om Gyan Mirandasya Gnajana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pasyatya Desatarine Panchakalpa Trubhisya Viva Sindhu Bevacha Nitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Elsewhere in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, Triguna Visaya Veda Nistriguna Bhavarjunya Nirdvandvo Nitya Sattvastar Nir Yoga Shema Atmavan. The Vedas deal mainly with the three subjects of the modes of material nature. So Krishna is speaking to Arjuna, and he says, become transcendental to these three, be free from all dualities and anxieties, regain in safety, and be fixed in the self. तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि तीनों जो वेद हैं उनमें भी सिर्फ भौतिक गुणों के अनुसार जो इंद्रिय तृप्ति के सुख के बारे में ही बताया गया है. तुम इन तीनों गुणों के ऊपर उठो और सारे द्वंद्वों से ऊपर आओ. This verse pertains to people who are pious.
तो यह श्लोक उन लोगों के लिए है जो धार्मिक है, पुण्यात्मा है, who do punya, जो पुण्य करते हैं but they don't do devotions. लेकिन वो भक्ति नहीं करते, And because of their punya, और अपने पुण्य के कारण their desire is to have a better material situation. और वे भौतिक स्थिति से में अच्छे होना चाहते हैं। And the material energy is arranged in such that there are 14 planetary systems and 3 levels of existence. तो The higher भौतिक प्रकृति इस तरह the higher planets, the middle planets, and the lower planets. भौतिक प्रकृति में 14 लोक हैं, 3 स्तर के, ऊपरी लोक, मध्य लोक और निम्न लोक। So the proportion of happiness and distress is different on the different levels of existence. तो अलग अलग जहाँ पे जीवन है वहाँ पे सुख और दुख का स्तर अलग है। We're on the middle planets now. अभी हम मध्य के लोक में हैं। There's a balance, somewhat of a balance between material happiness and material distress. यहाँ पे भौतिक सुख और दुख में संतुलन है। Of course, in this age of Kali, the distress is only increasing. लेकिन कलयुग के समय में जो तनाव है बढ़ती जा रही है। But people see that I have a particular material situation. I want a better material situation. तो लोग किसी स्थिति में हैं और उस भौतिक स्थिति को वो और भी ज्यादा बढ़िया करना So चाहते they हैं, worship the devas. तो वो देवताओं की तरफ जाना चाहते Yeah, हैं। in the Bhagavatam explains that different devas could provide different facilities for material enjoyment. तो भागवतम में बताया गया है कि अलग अलग देवता हैं जो अलग अलग भौतिक सुख हमें दे सकते You हैं। want good family, you want money, you want some fame, you want some strength, you want a good wife or husband. You worship the devas. तो यदि आपको अच्छा परिवार, पैसा, शक्ति, अच्छा पत्नी पति चाहिए तो आप अलग अलग देवताओं की आराधना कर सकते You हैं। want to defeat your enemies, you worship the demons. आप शत्रुओं का वध करना चाहते हैं, आप देव राक्षसों की भी उपासना कर सकते हैं। So the verses go on explaining that there are different personalities who are known as demigods. You can worship them and get some facility for better material enjoyment. तो भागवत में बताया गया कि आप अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हैं, उससे आप भौतिक रूप से बढ़िया हो सकते हैं। But Krishna, he speaks about this in the Bhagavad Gita in the 7th chapter. लेकिन भगवान कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, He says those who worship the demigods for material benefits, they are less intelligent. भगवान बताते हैं कि जो देवताओं को भौतिक लाभ के लिए उपासना करते हैं वो कम बुद्धिमान हैं, Because he says whatever the demigods can give is temporary, क्योंकि देवता जो भी देते हैं वह अनित्य है, is subject to time. वह समय के अधीन है। Just like it says here, Shinye Punye Martya Loka Vishanti, means that after enjoying in the heavenly planets for so many thousands of years, one has to again fall down to the material world and again struggle to find some kind of happiness in the lower planets. तो इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग लोक में हजारों साल सुख भोगने के बाद फिर से पुण्य क्षीण होने पे उन्हें मृत्यु लोक आना पड़ेगा और फिर से उनका पूरा जीवन संसार चक्कर में चलता रहेगा। So it's temporary. तो यह अनित्य है And it's not necessarily guaranteed that one is going to enjoy. और यह भी सुनिश्चित नहीं है कि हमको भौतिक भोग का आनंद मिल सकेगा कि नहीं। There's one verse in the Bhagavatam, Tasyaivo hetu pratite nakovito, nalabhyate tar upam paryata, natavyate lam dukkanavam anya sukham, kalena sarvatram gambira ramhasa. This particular verse explains how that one who is actually intelligent, has good brain substance, can think, does not try for any place in the material world, all the way to the higher planets or anywhere in the material world, because every place there is repeated birth and death. तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति बुद्धिमान है वह इस पूरे भौतिक जगत में, यहाँ तक कि ऊपरी के लोकों में भी आराम नहीं ढूंढना चाहता, क्योंकि इस पूरे संसार में जन्म मृत्यु का चक्र है। So anywhere in the material world you go, you have to take birth and you have to die. आप भौतिक जगत में कहीं भी जाएं आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में रहना पड़ेगा। And there's proportions of material happiness and distress depending on the level of material existence.
और वहाँ पे अलग अलग लोकों में उस जगह के अस्तित्व के अनुसार हमें सुख दुख मिलेगा। One who's actually intelligent ले- sees that why should I go for something temporary when I can go for something eternal? तो जो वास्तव में बुद्धिमान है वो सोचेगा जब मुझे शाश्वत चीज मिल सकती तो मैं अनित्य चीज के पीछे क्यों भागूं। But anywhere in the material world, it's temporary. इस पूरे भौतिक जगत में सब कुछ अनित्य है, अस्थायी है। So, and the material miseries are there. Janma mitya jara vyadi dukkha doshanam darshanam. और हर एक लोकों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे क्लेश हैं। Yeah, that means there's birth, death, disease, and old age everywhere in the material world. ये चारों व्याधियां भौतिक जगत में हर जगह हैं। A person is in jail मान लो कोई व्यक्ति जेल में है and they think, well, I'm suffering in jail. और वो सोचता है अरे मेरे को जेल में कितना कष्ट है, Maybe I should get a better position in the jail. चलो मैं जेल में कोई बढ़िया पदवी हासिल कर लूं। Let me have some privileged cell, some special cell with a better bed and some extra amount of foodstuffs. तो चलो मैं जेल में ही अपने लिए एक बढ़िया व्यवस्था करता हूँ जहाँ मेरे लिए बढ़िया खाना पीना और बिस्तर है। In jail, there are three kinds of prisoners. तो जेल में 3 तरह के कैदी होते हैं। There are normal mainstream prisoners. जो एक साधारण होते हैं, Those who become criminal in jail, they're put into what is called solitary confinement, and they have to suffer more and live by themselves in a very small little cell. तो ज्यादा कैदी होते हैं उनको एकांत में रखा जाता है, उनको ज्यादा कष्ट मिलता है, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। And then you have the privileged prisoners. और उनमें से भी कुछ होते हैं जिनको विशेष अधिकार मिला रहता They है, behave very nice in the jail, उनके साथ जेल में भी बहुत बढ़िया बर्ताव होता so है, they get some special privileges. उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। They can go to the library, वो लाइब्रेरी जा सकते हैं, and they also may be in charge of taking care of other prisoners. वो अपना जो भी उनका रोजी रोटी उसका व्यवसाय के में भी कुछ कर सकते हैं। So, trying for a better material position in the material world is like trying to be a privileged prisoner. That's it. तो इस भौतिक जगत में अच्छी पदवी स्थिति हासिल करना यानी कि आप एक विशेष अधिकार वाले कैदी बनना चाहते हैं। It's not about trying to get a better position, but it's about getting out. तो हमें अच्छी पदवी हासिल नहीं करना है, हमें इस जेल से ही बाहर निकलना है। Just like many of you probably heard the history, many years ago there was this ship called the Titanic. You heard of that? आप लोगों ने ये इतिहास बहुत पहले सुना ही होगा कि एक जहाज था पानी का, उसका नाम था टाइटैनिक। This was around the beginning of the 1900s. 1900 सदी के शुरुआत की बात है। Supposedly they created this boat that was very invincible, could not sink, could go anywhere, powerful boat, big boat, could hold thousands of people. तो एक बहुत ही शक्तिशाली पानी का जहाज बनाया गया जो कहीं भी जा सकता था और ऐसा था कि कहीं डूबेगा नहीं और इसमें हजारों लोग थे। But on the first voyage, it sank. लेकिन अपनी पहली यात्रा में ही यह डूब गया। And it hit a big piece of ice in the middle of the North Atlantic. और ये एक बहुत बड़े बर्फ के ढेर से टकरा के नष्ट हो गया। So the people who were on the bottom level, they saw death coming right away. तो जो लोग नीचे थे उस जहाज में वो समझ गए कि तुरंत हमारा मृत्यु आ रही है। And the people on the top level, they didn't see it right away. और जो लोग ऊपर थे वो नहीं देख पाए कि क्या हो रहा है। So the people on the bottom level were frightened, and people on the top were still having a party. तो जो लोग नीचे थे वो डर रहे थे और जो ऊपर थे वो पार्टी कर रहे थे। So you might say, well, better to be on the top level. तो जो ऊपर वाले थे तो वो अपना आनंद में ही थे, The party's longer, उनकी पार्टी चल रही थी, but everybody sank, the whole boat. लेकिन सब के सब डूब गए, Thousands of people died. हजारों लोग मर गए। So the idea is that if you want to change your seat on the Titanic, is like trying to change your place in the material world. It's still going to go down. तो आप जैसे टाइटैनिक में जैसे आप सीट बदलेंगे और उसकी तुलना की जा सकती है अगर हम भौतिक जगत में अपनी स्थिति बदलें, आखिर में हमें डूबना ही पड़ेगा। The one who takes shelter of the process of pure devotional service can free themselves from the repetition of birth and death. लेकिन यदि कोई शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है।
We don't die, हम मरते नहीं हैं, but the body dies. हमारा शरीर मरता है। And because the body dies, we have to undergo some suffering. चूंकि हमारा शरीर मरता है इसलिए हमें कुछ क्लेश झेलने पड़ते हैं। We are eternal. हम नित्य हैं। Nahanyate hanyamane sarire, that the soul is eternal. हमारी आत्मा नित्य है। So we belong in the eternal atmosphere, not in a temporary atmosphere. हम एक शाश्वत जीव हैं, अनित्य नहीं हैं। You take a fish and you put him on the land, you take him out of the water and you give him a nice fish house and some, I don't know, some fish clothes or something. You give him something material. He's going to die because he's out of water. तो अगर आप मछली को बाहर निकालते हैं पानी से, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा सुविधा भी देते हैं, लेकिन चूंकि आप पानी से निकाल दिए तो जीवित नहीं रहेगी। So it says the soul is not meant to take birth in this world. तो उसी प्रकार से यहाँ आत्मा भी है, वह इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए नहीं बना है, But somehow we've come here. लेकिन किसी प्रकार से हम यहाँ आ गए हैं। So trying to get a better position in the jail is not the solution to the problem. तो जेल में एक अच्छी सुविधा पाना समस्या का समाधान नहीं है। The problem is get out. वहां से प्रयास करना चाहिए कि बाहर निकलें। Go back to that place where it is exactly according to your nature. तो हमको वहां से निकल के ऐसी जगह जाने चाहिए जो हमारे स्वभाव के अनुसार हो। We are eternal. हम नित्य जीव हैं। We have complete and transcendental knowledge. हमारा दिव्य ज्ञान में रुझान है। And we're always joyful, happy. हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, But not in this world. लेकिन यह इस जगत में नहीं, Because we don't belong here. It's a jail. क्योंकि ये आखिर में जेल है। So the process of bhakti is the means to get out. तो भक्ति की जो विधि है उससे हम इस जेल से बाहर निकल And सकते हैं return to the spiritual world. और हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। And bhakti is easy. और भक्ति बहुत सरल है। To live in a material world is difficult. इस भौतिक जगत में रहना बहुत मुश्किल है। You have so many responsibilities, so many things to do, so many things to try to adjust, and still it doesn't work. तो इस भौतिक जगत में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, तो यह जीवन आसान नहीं है। To be successful in the material world, you have to put a lot of time, energy, effort, resources, and there's no guarantee you're going to be successful. तो इस भौतिक जगत में सफल होने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय, अपनी ऊर्जा और बहुत प्रयास लगाने पड़ते हैं, फिर भी यह सुनिश्चित नहीं होता कि हम सफल ही निकलेंगे। But to worship the Supreme Lord, which is the process for going back to the spiritual world, is easy. लेकिन भगवान ने आध्यात्मिक जगत जाने का जो रास्ता बताया वह बहुत ही सरल है। Chant Hare Krishna. सिर्फ हरि नाम जप करो। Yeah, so easy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Satatam kirtayantam. Chant as much as you can. जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक जप करिए। We have to eat, right? आपको खाना है। We can eat some pav bhaji on the market out there. आप वहाँ बाहर कुछ पाव भाजी वगैरह भी खा सकते हैं। Or you can come here and get some nice, kacharis and halavas, samosas, chutney. या फिर आप यहाँ मंदिर आके भी कुछ हलवा, समोसा, कचौड़ी, चटनी खा सकते हैं। And when you eat transcendental food offered to the Lord, you get transcendental happiness. और जब भगवान को अर्पित आप प्रसाद खाते हैं तो आप दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं। Happiness that comes from taking prasadam, the mercy of the Lord, the food that's offered unto the Lord's plate, brings happiness. तो जो भगवान को अर्पित भोग है वह प्रसाद भगवान की कृपा होता है, उसको लेने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। Prasadam is spiritual. तो प्रसाद आध्यात्मिक है। It looks like ordinary food. यह साधारण भोजन ही दिखता है। Because the Lord has glanced on it, He has accepted it, He changes it. Now it has become a means by which you can elevate your consciousness. चूंकि भगवान ने उस पर अपना दृष्टिपात किया है तो वह आध्यात्मिक हो गया है, और यदि हम उसको पाते हैं तो उससे हमारी चेतना अच्छी होती है। And come to the kirtan. कीर्तन में भाग लीजिए, Or have kirtan in your home. या फिर अपने घर में भी कीर्तन करिए And then sing. और गाइए।
Everyone likes to sing. सबको गाना पसंद है। And Krishna doesn't care whether you're a good singer or not, as long as you sing. और भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत बढ़िया गाते हैं या नहीं। He doesn't say, oh, he can't sing. No, he says, oh yeah, you're singing for me, very nice. Even if it's out of tune, he likes it. तो भगवान ऐसा नहीं कहते अरे तुम नहीं गा सकते मत गाओ, भगवान बोलते हैं अरे तुम मेरे लिए गाना चाहते हो, बहुत अच्छा, और गाओ। So everyone likes to sing. तो सबको गाना पसंद है। And dance. नृत्य भी करना सबको पसंद है। Dancing, they say dancing when you feel happy, you dance. तो ऐसा कहते हैं जब आप खुशी में हो तो आप नाचो, And when you sing, you dance. जब आप गाइए तो नाचिए भी। And if you don't feel like dancing, if you dance, then you feel like dancing. अगर आपका नाचने का मन नहीं कर रहा फिर भी आप नाचो तो आपका नाचने का मन करेगा। Yeah, so singing, dancing, eating nice food, तो गाना, नाचना, अच्छा खाना, praying to the Lord. भगवान से प्रार्थना करना, Dear Lord, I don't want to come back to this crazy place. हे भगवान इस भौतिक जगत में डरावनी जगह में फिर नहीं आना चाहता, Please take me where you are. मुझे वापस उस जगह ले जाइए जहाँ पर आप हैं। We can pray like that. ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। Lord hears if we're sincere. भगवान हमारी निष्ठा पूर्वक प्रार्थना को सुनते हैं। And we got so many books. हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, Bhagavad Gita, भगवद गीता, Srimad Bhagavatam, श्रीमद भागवतम, Nectar Devotion, भक्ति रसामृत सिंधु, yeah, Chaitanya Charitamrita. चैतन्य चरितामृत, Hundreds and hundreds of books. सैकड़ों सैकड़ों किताबें। Life, you can't even finish one of the books in your whole life. So much knowledge is there. अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में एक भी किताब खत्म करते तो उसमें से आप बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। And this knowledge you can't find anywhere. और यह ज्ञान आप पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाएंगे। It's coming from the spiritual world. यह ज्ञान आध्यात्मिक जगत से आ रहा है। Into the hearts of the pure devotees who give it to us in transcendental form of scripture. और भगवान के शुद्ध भक्त अपने हृदय से यह ज्ञान दिव्य साहित्य के रूप में हमें दे रहे हैं। So we say singing, dancing, feasting, philosophy. तो हम कहते हैं कि नाचना, गाना और खाना यही है, बस इतना। That's all. And then you go back to Godhead. बस इतना आप करिए और भगवत धाम चले जाएंगे। So why would you want to work so hard just to get a position in this material world which you lose anyway? तो इस भौतिक जगत में बहुत काम करके अपनी पदवी बना के क्या मतलब, जो कि आखिर में चली ही जानी है। And those who are serving the Lord, they're happy. और जो भगवान की सेवा करते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं। Even if they don't look happy, still they're happy. अगर वो खुश ना भी देखे तो भी वो खुश रहते हैं, Because they know they're serving the Lord and they feel satisfied. क्योंकि उन्हें पता है वो भगवान की सेवा करें और वो संतुष्ट रहते हैं। Yeah, but here it says, even if you get so many punya, pious activities, which you may in next life you can go to the heavenly planets. After some time, shinye punya martya loka vishanti, you come back down. लेकिन यहाँ बताया गया कि आप अगर बहुत पुण्य भी अर्जित करें तो आप स्वर्ग जो जाएंगे, लेकिन आखिर में पुण्य क्षीण होने पे आप मर्त्य लोक में आएंगे। And then you have to go, and then you have to struggle again. Life after life. Maya dabase, gacho base, gacho bahu bubu bhai. Jeev Krishna das, hey Vishwas, kolina adukanai. Yeah, life after life, taking births in different places. Maya dabase, Maya is pushing us this way, that way. Kardanan guna sango so sarasa joni janvashu. So many lives. How many lives we've been in this material world? Millions. We can't even count. तो माया के चक्कर में हम पढ़कर बार बार जन्म लेते रहते हैं, और कितने जन्म हम ले चुके हैं हमें मालूम भी नहीं, अरबों जन्म। Now we have a chance to finish all this nonsense. अब हमारे पास यह अवसर है कि यह सब जो भी अज्ञान है उसको हम खत्म कर सकते हैं, And it's easy. और यह बहुत सरल है। Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna. चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, He just made it so easy. उन्होंने सब बहुत सरल बना दिया। Krishna said in the Bhagavad Gita, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, Sarvadharma pradikshya mam ekam saranam vrajaham tvam sarvabhavebhyo mokshayashyami masuchaha. You surrender to me. You give up all your nonsense. I'll take care of you. तो भगवान बोलते हैं आप सब कुछ छोड़ के पूरी तरीके से मेरी शरण लो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। And nobody's coming. और कोई उनकी शरण नहीं ले रहा।
Krishna thought, oh, I made it so difficult. Nobody's coming. तो भगवान ने सोचा अरे मैंने इतना कठिन बना दिया कि अब विधि कोई नहीं आ रहा है। So he came again as Chaitanya Mahaprabhu. तो फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में He आए। said, don't worry about surrender. Forget about that. तो बोले ठीक है भूल जाओ शरणागति के बारे में। Just chant, dance and eat prasad. That's all. सिर्फ नाचो गाओ और प्रसाद खाओ। बस see. And read some books. ये बहुत सरल है और हाँ थोड़ा पुस्तकों का भी अध्ययन करिए। You can discuss the books too. It makes it more interesting. आप पुस्तकों पे चर्चा भी कर सकते हैं। So the process is very natural, very easy. It says even a child can do it. यह विधि बहुत ही सरल और स्वाभाविक है, एक बच्चा भी कर सकता है। But it is the highest form of worship. लेकिन यह सर्वोत्कृष्ट प्रकार की आराधना है। It's been given by God Himself in the form of His own incarnation known as Sri Chaitanya Mahaprabhu. यह विधि सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि यह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई है। So if we understand, yes, this is so easy, and why am I struggling so hard every day just to maintain myself in this body when I can actually simplify my life simply by worshiping the Lord? तो प्रश्न ये उठता है कि जब सब कुछ इतना सरल है तो हमारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है कि इतना संघर्ष करने के बाद हम सब कुछ पाते हैं। And whether you're in a family or whether you're single, it doesn't matter. Anyone can become Krishna conscious. भले ही आप परिवार में हो अकेले हो आप सब कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। Grihe tako, bone tako, sabda hari bole tako. You know, whoever you are, wherever you are, whatever you're doing, chant Hare Krishna. आप जहाँ भी रहते हैं जो भी करते हैं हर समय आप हरे कृष्ण का जप करिए। And chanting is nice. और ये जप बहुत ही बढ़िया है। Someone asked our spiritual master, Srila Prabhupada. तो हमारे गुरु देव श्रील प्रभुपाद, This was in America when he first started preaching. तो ये अमेरिका की बात है जब उन्होंने वहाँ प्रचार प्रारंभ किया था। He said, "Hey, Swamiji, तो किसी ने कहा ए स्वामी जी what do you get from chanting?" आपको जप करके क्या मिलता है? So they were thinking, you might get some money or some position or something, तो वो ऐसा इसलिए पूछा था कि उन्हें लगा कि कुछ पैसा या फिर कोई अच्छा पद मिलेगा जब Then करके। Srila Prabhupada said, we get chanting from chanting. श्री प्रभुपाद ने कहा हमें हरिनाम करके हरिनाम मिलता है। When you chant, you want to chant more. जब हरिनाम करते तो आप और हरिनाम करना The more चाहते you हैं chant, the more you want to chant. और जितना आप हरिनाम करेंगे और हरिनाम करने की इच्छा होगी। You can ask him. She's always chanting. आप कृष्ण कीर्तन से पूछ सकते हैं, वो हमेशा जप करते हैं। His mother wants him to work, but he doesn't want. He just wants to chant. उनकी माता चाहती है कुछ काम भी करे लेकिन वो हमेशा जप ही करना चाहते हैं। He's happy. वो खुश है पूरा। And she's happy because he's happy. और उनकी माता खुश है क्योंकि वो खुश हैं। But because she's a mother, she has to figure out, my son needs a job. तो उनकी माता सोचती है उनके बारे में कि उनको थोड़ा नौकरी भी होनी चाहिए। But he's got a job. लेकिन उनके पास नौकरी भी है। He's working for God. वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं। Yeah, so he's employed 100%. तो वो 100% रूप से उनको रोजगार मिल चुका है। So yeah, here's an example of someone. See how much he's smiling? He's always smiling. आप देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, वो हमेशा हंसते रहते हैं। Because he chants all the time. He doesn't know how to do anything. He can't even write his name, but he can chant. तो हमेशा जब करते रहते इसलिए उनको कोई चिंता नहीं रहती। So yeah, so the process is, तो यह विधि very simple because Krishna's name is Krishna. क्योंकि यह विधि बहुत सरल है क्योंकि कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण है। Kali Kale Namarupa Krishna Avatar. Krishna has come in his name. भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। The name is Krishna. यह नाम स्वयं कृष्ण है। It's not like it represents Krishna. No, it is Krishna. ऐसा नहीं कि नाम प्रतिनिधित्व करता है कृष्ण का, नहीं यह असल में कृष्ण ही है। When we chant the holy name, we are actually associating with Krishna. Krishna is dancing on your tongue. जब हरिनाम जप कर रहे हैं तो आप कृष्ण का संग ले रहे होते हैं और हरिनाम आपकी जिह्वा पे नृत्य कर रहा होता है। And the scriptures explain, and even in general, there's no more beneficial way to worship the Lord in this age than to glorify the Lord by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. शास्त्र बताते हैं कि इस युग में हरि नाम के अलावा और भी कोई बेहतर विधि नहीं है भगवान का गुण महिमा कीर्तन करने की। Yeah, some people say, well, I have no time. कुछ लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, I got too many things to do, हमारे पास बहुत सारे काम है करने को, too many places to go, बहुत सारी जगह है जहाँ में जाना है, too many people to meet. बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है। But if you make time, then Krishna will make time for you. लेकिन अगर आप समय निकालेंगे तो भगवान आपके लिए समय की व्यवस्था कर देंगे। The more you chant, the more time you have for other things also. तो जितना आप जप करने के लिए समय निकालेंगे उतना आपको बाकी सारे काम के लिए भी समय मिल जाएगा। Now that doesn't make logical sense, does it? तो यह बहुत ही प्रामाणिक है। Because when you chant the holy name, your mind becomes expanded. क्योंकि जब आप हरि नाम का जप करते हैं तो आपके जो मन दिमाग है उसका विस्तार हो जाता है। You become actually powerful. आप दरअसल शक्तिशाली हो जाते हैं। And then you can do so many things, even in an ordinary sense. तब आप भौतिक स्तर पर भी सामान्यतः बहुत सारी चीज कर सकते So हैं। even from a material point of view, chanting is beneficial. तो भौतिक दृष्टिकोण से भी हरि नाम करना बहुत ही लाभकारी है। So the process is very easy. So this verse is saying that why waste time going up to the heavenly planets and then again falling down and then life after life just constantly cycling in the cycle of birth and death. तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया कि अपना समय क्यों बर्बाद करना, पुण्य कर्म कर्म के ऊपर के लोक में जाना और फिर नीचे लोक में आके फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना। And Srila Prabhupada, he spread Krishna consciousness all over the world. श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। In so many countries, कितने सारे देशों में, even in China. चीन में भी। But some of the countries that are so, what we might say, impious or sinful, they're chanting Hare Krishna. तो जो देश बहुत ही अधार्मिक हैं वहां पे भी अब लोग हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। Because it's universal. It's not just for a certain class of people. क्योंकि यह जो हरि नाम का जप है यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए है। So that means anyone is fine, everyone, no matter who you are or what your background is or what your position in society is, you can find success in chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो यानी कि आप कोई भी हो, आपकी कोई भी पृष्ठभूमि भी हो, आप किसी भी जगह से भी हो, आप हरि नाम का जप करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Scripture say, Palinda, what is that? Palinda Pukasa. What's that first one? Palinda Ambira Samba Kavakasyadaya. It names the different races that are around the world that are of the low class. Even those, if they take up the chanting of the Hare Krishna mantra, they can achieve perfection in life. तो अगर अधम कुल के लोग भी हरि नाम का जप करते हैं तो हरि नाम के जप से वह परम सिद्धि लाभ कर सकते हैं। So the process is easy. तो यह विधि बहुत सरल है। It's so easy that it seems like it's not even, well, you might think, give me something harder. तो ये विधि इतनी सरल है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा किसे करना है। आप बोल सकते हैं अरे मुझे कोई और कठिन विधि बताओ। Spiritual life must be harder. We have to, deny ourselves all kinds of facilities. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन बहुत ही कठिन होना चाहिए, सारी सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए। You have to put your body into very miserable situations. शरीर को बहुत ही कष्टप्राय स्थिति में डालना पड़ता होगा। No, it's easy. नहीं, यह सरल है। And you eat real nice food. आप बढ़िया प्रसाद भी पाते हैं। And you meet nice people. आप अच्छे लोगों से मिलते हैं। Devotees are nice because they care about people. भक्त लोग बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि वो सारे लोगों का ख्याल रखते हैं। People in the material world, they care about what they can get from you.
तो भौतिक जगत Devotees think about what they can give you. तो इस भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि उनको आपसे क्या मिल सकता है, लेकिन भक्त सोचते हैं कि वो आपको क्या दे सकते हैं. Everything about devotional service is wonderful because it is all centered around Krishna. तो भक्ति के आसपास सब कुछ बहुत ही दिव्य होती है क्योंकि सब भगवान कृष्ण के ऊपर केंद्रित रहते हैं. So Krishna says, anyone who worships the demigods, they're not very intelligent. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई देवताओं की उपासना करता है तो बुद्धिमान And नहीं he है. also says that whatever the demigods can give, I give to the demigods. और वो कहते हैं कि देवता जो भी देते हैं दरअसल मैं ही उन्हें देता हूँ देवताओं He को. said, Aham Adi Devanam, I'm the source of the demigods. भगवान कहते हैं मैं सारी देवताओं का भी स्रोत हूँ. The demigods can't do anything without being empowered by Krishna. देवतागण भगवान कृष्ण के द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के बिना कुछ भी नहीं कर सकते. So if you want to worship, why not worship the highest instead of worshiping the lower? तो अगर आप पूजा उपासना करना ही चाहते जो तो सो परम है उसकी आप आराधना क्यों नहीं करते. Why flatter the police chief when you can flatter the governor? तो पुलिस के पास क्यों जाना अगर आप गवर्नर के साथ सीधे बात कर सकते हैं. तो Why go for the lower person when you can go for the higher person? तो हम क्यों इस नीचे लोग के स्तर से बात करें, सीधे हम ऊपर के लोगों से बात कर सकते हैं. So that is Krishna consciousness. तो यह कृष्ण भावनामृत है. So those who take up Krishna consciousness, they are considered to be very fortunate. तो जो कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं उनको बहुत ही भाग्यशाली समझा Because जाता they है understand what is their best interest. क्योंकि वे अपना परम स्वार्थ समझ पाते हैं. And those who try to somehow or other make a better material arrangement, they get something, they lose it, and then they continue to struggle trying to get it again. It's just a waste of time and energy. लेकिन जो सिर्फ भौतिक व्यवस्था बनाने के ही चक्कर में पड़े रहते हैं वो बहुत मेहनत करके उसे पाते हैं फिर वो उसे खो देते हैं. तो पूरा का पूरा समय अपनी मेहनत वो भौतिक लाभ में ही बिता देते हैं. And the devotee is happy. लेकिन भक्त उसके विपरीत खुश रहते हैं. Whether he's materially wealthy or he's very simple and has very little, he's happy. तो भले ही वह भौतिक रूप से उनके पास बहुत संपदा हो या फिर ज्यादा कुछ ना भी हो फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं. The happiness is the goal. क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वह आनंद है. If you have a million, if you're a crorepati and you're not happy, what's the use of all of your crores? तो मान लीजिए आप करोड़पति हैं और फिर भी आप खुश नहीं तो आपके करोड़ रुपए का क्या मतलब. But if you have very little and you're happy, then the success is your happiness, not how much you have or what you're doing. तो मान लो आपके पास कुछ कम रुपए भी है लेकिन आप खुश हैं तो वो आपके जीवन की सफलता है क्योंकि दरअसल हम खुश रहना ही चाहते So हैं. Krishna consciousness is the highest form of happiness. तो कृष्ण भावनामृत सर्वोत्कृष्ट रूप का आनंद है. It takes us right to the lotus feet of the Supreme Lord. क्योंकि वे हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों की ओर ले जाता है. Manusa Janam Mapaya Radha Krishna Navadiha Janiya Suniya Pishainu Golokera Premangana Harinam Sankirtana Ratin Jan Nilokene Upahai Dina Hina Chaktanchilo Harinam Udarilo Tar Shakshi Jagai and Madhan. The beautiful song sung by Srila Das Thakur, glorifying the process of devotional service as given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Even Jagai and Madai, two very sinful persons, they committed more sins than anyone could possibly count
Even Yamaraj could not keep up with their sins. तो यह बहुत ही सुंदर गीत है जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं भक्ति की विधि का गुण महिमा कीर्तन करते हुए कि जो दो बहुत ही पापी थे व्यक्ति जगाई मधाई, यहाँ तक कि यमराज भी उनका रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे, ऐसे लोग भी But they got the mercy of Lord Nityananda. उनको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई And they become pure. They became free from all their sinful activities and got the chance to associate with devotees and perform devotional service. वो भी भगवान की कृपा से अपने सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्हें भक्ति करने का और भक्तों के संग करने का अवसर मिला. So Lord Chaitanya is very merciful. तो श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है. Somebody might think, well, I'm not so good at bhakti. Might be too difficult for me. तो कोई ये सोच सकता है कि मैं तो भक्ति में बहुत अच्छा नहीं हूँ, भक्ति मेरे लिए बहुत कठिन है. And we have the example of Jagai and Madai. तो हमारे पास जगाई मधाई का उदाहरण है. What was their qualities? उनके पास भला क्या गुण थे? The only quality they had is they got the mercy of Lord Nityananda. That was their quality. उनका बस इतना ही गुण था कि उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई. So Srila Prabhupada is giving everybody the mercy. तो श्रील प्रभुपाद सबको कृपा दे रहे हैं. Someone came to Prabhupada, give me your mercy. कोई व्यक्ति आया श्रील प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद अपनी कृपा दीजिए. Prabhupada said, I'm giving, you just take. That's all. श्रील प्रभुपाद ने Come, chant Hare Krishna, dance, come see the deity, take prasadam, read some books, that's all mercy. श्रील प्रभुपाद ने कहा मैं दे रहा हूँ, बस आप इसको ले लो, आप मंदिर आओ, हरि नाम जप करो, प्रसाद खाओ, भगवान का दर्शन करो. So we're very fortunate. We are, even if we're like Jagai and Madai, we can somehow or other get the mercy. तो हम बहुत ही भाग्यशाली कि किसी न किसी प्रकार से हमको भगवान चैतन्य की कृपा मिल गई. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Thank you. Hare Krishna. Prashna? Questions? Oh, we have a question here. Mataji, you have questions? No. प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं. No? प्रश्न पूछ सकते हैं. Anybody? Okay. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद फॉर सच अ वंडरफुल क्लास. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि जो कठिन जो उसकी वो रहती है, कठिन जो प्रोसेस रहती है वो हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कृष्णा ने हमको एक इजी स्टेप दिए, इजी प्रोसेस दिए. पर कई बार क्या होता है कि जैसे कठिन प्रोसेस रहती है तो हम उसमें एक बार फिर भी कर लेते हैं, इजी प्रोसेस को हम और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो इससे कैसे फाइट बैक? The question is that as you are told that this process is very easy, but sometimes if something is very easy then we take it for granted. So if something is very difficult, then we are somewhat sincere. So how to value this easy process? How to value it? Yeah. It's easy, but it's rarely attained. तो यह सरल है लेकिन बहुत दुर्गम भी है, दुर्लभ है. Nectar Devotion explains that bhakti is very rare. Very few people take up bhakti. तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम लोग इसे पा सकते हैं. And it's rare. और यह दुर्लभ है. So we can appreciate that although it's easily available and anybody can take it, very few take it. तो हम इसकी सराहना करते हैं कि यद्यपि ये सबके लिए उपलब्ध है लेकिन फिर भी बहुत कम ही से पा सकते हैं. So if you get the chance to take it, that means you're fortunate. लेकिन अगर आपको इसको स्वीकार करने का अवसर मिला, इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं. That means the Lord has shown you special mercy. इसका मतलब भगवान ने आप पर अपनी विशेष कृपा दिखाई है. So if you're getting mercy, you should be grateful. तो अगर आपको कृपा मिल रही है तो आपको बहुत ही आभार प्रकट करना I have चाहिए. a chance to make my life perfect and achieve ultimate perfection in the spiritual world. One should be grateful for that opportunity. हमें इसका आभार प्रकट करना चाहिए कि हमें परम सिद्धि प्राप्त करके अपने जीवन सफल बनाने का अवसर मिला है. Therefore, even though it is easy, still we should be thankful for having that opportunity.
तो यद्यपि यह सरल है, लेकिन फिर भी हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। Because although it's easy, very few people take it up. दरअसल ये सरल है, फिर भी बहुत कम ही लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। What is that verse from the seventh chapter, verse number 3? Manushanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye yatatam avisidhanam kaschit mam veti tattvataha. Read the verse. हाँ, हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति ही सिद्ध होने का प्रयास करता है, और उन हजारों हजारों सिद्धों में कोई मुझको तत्वतः जानता है। I'll read it. And if many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me on truth. So many people may come, but to reach perfection is very rare. But if you become determined and take the association of advanced devotees, then you're guaranteed success. तो भक्ति में बहुत लोग आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही परम सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय कर लें, उन्नत भक्तों का संग करें, तो निश्चित रूप से ही आपको परम सिद्धि प्राप्त मिलेगी। So we have to consider ourselves fortunate to have this opportunity. तो हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें यह अवसर मिला है। If you have money and you don't spend it, then what's the value? तो अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपको उसका कीमत पता होनी चाहिए। There are some people, they have money and they put it in the bank. कुछ लोग के पास पैसा तो उसको बैंक में जमा करते And हैं, then every week they look at the bank account just to feel good how much money they have. तो फिर वो उसको जमा करके हर हफ्ते देखते रहते कि उनके बैंक में कितना And रुपए है। they keep accumulating money and the bank account is going up. तो अपने बैंक में वो पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा करते But they रहते don't हैं they don't spend it. और फिर उसका खर्चा नहीं करते। They just want to read the numbers, that's all. तो उसको बस इकट्ठा करते जाते हैं। They just want to read the numbers and feel good. Oh, I'm rich. और वो बस खाली अपना खाता चेक देखते रहते हैं, उसमें इतना ज्यादा रुपए हो गया है। So what's the use of the money if you can't use it? तो ऐसे पैसे का क्या लाभ अगर आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। So here we are. We have a chance for Krishna consciousness. Take advantage of it. तो हमारे पास यह अवसर है कृष्ण भावनामृत का, And to do that, you have to be grateful. और इसको स्वीकार करने के लिए आप में आभार होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। You have to feel yourself fortunate. आपको अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। Bhagyavan means fortunate. भाग्यवान यानी कि सौभाग्यशाली। Okay. Anyone else? Questions? Oh, okay. One gentleman there. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मन में विचार चलते रहते हैं, क्या ये विचार प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर चलते रहते हैं, या कोई विचार मतलब मेरे पे ही डिपेंड करता है? Whatever thoughts that keep on going on in our mind, are they under the three moods of material nature? Well, if they're thoughts about Krishna, no. If they're thoughts about something of this world, yes. तो यदि आपके जो दिमाग के ख्याल हैं, यदि वो भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, तो वो तीनों गुणों में नहीं है। अगर इस भौतिक जगत के बारे में सोच रहे हैं तो हाँ। Yeah, you can choose what to think about. तो आप यह निर्णय कर सकते हैं कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। In this world, there's so many different ways to think about. इस भौतिक जगत में सोचने के कई तरह के रास्ते हैं। Yamaraj says, what is more numerous than the blades of grass in creation is the thoughts and the minds of men. तो यमराज कहते हैं कि what is more numerous than the blades of grass in creation? कि
जो घास के तिनके हैं उससे भी ज्यादा क्या, जो घास के तिनकों से भी ज्यादा है इस दुनिया में, the thoughts in the minds of men. वो है इंसान के मन का विचार. You can't even count the amount of thoughts that you have every day. You have so many thoughts. आप गिन भी नहीं सकते कि आपके मन में हमेशा कितने ख्याल आते हैं. But any thought that is about devotion to Krishna or about Krishna, that thought brings your consciousness तो up. जो विचार कृष्ण के बारे में होते हैं उससे आपकी चेतना ऊपर उठती है. So we want spiritual thoughts. तो हम चाहते हैं हमारे आध्यात्मिक विचार हो. That's why we come to the temple. इसीलिए हम मंदिर आते हैं. That's why we read the books. और हम पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं. All these bring about spiritual thoughts, and that brings us to Krishna. तो यह सब आध्यात्मिक विचार हैं जो कृष्ण से जुड़े हैं. So, but any other thought is under the three modes. तो इसके कृष्ण के अलावा अन्य सारे विचार भौतिक गुणों के हैं. There's only two things, material and spiritual. केवल दो ही चीजें हैं, भौतिक आध्यात्मिक. The three modes make up everything material. और ये जो तीनों गुण हैं वह सब कुछ भौतिक प्रकृति का निर्माण करते हैं. Okay? Think about Krishna. If you think about Krishna, you'll be happy. Hare Krishna. If you think about Krishna, you won't have any problems in life. The only problem is we don't think about Krishna. That's why we have problems. आप भगवान कृष्ण के बारे में सोचिए तब आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी. समस्या ये है कि हम कृष्ण के बारे में नहीं सोचते, इसलिए सारी समस्या आती है. When you think about Krishna, you're with Krishna because Krishna is none different than his thoughts. जब कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप कृष्ण के साथ होते हैं क्योंकि कृष्ण अपने विचारों से भी अभिन्न है. Okay? Any other questions? Yes. We have a question by the ladies also in the back there. Go ahead. After him, okay. Hare Krishna Maharaj ji, Dandavata Pranam. So Maharaj, we have heard many times about the devotional service process, how simple it is, how valuable it is, and that it can take us back home, back to Godhead. But then too, we are not able to develop that kind of seriousness that is necessary for achieving That's this. the problem. The scriptures say, some say bhakti is easy and some say bhakti is hard. So what is it? तो शास्त्र में कभी ऐसा बताया है भक्ति सरल है भक्ति कठिन है, तो यह क्या है? It poses the question. It's saying, is it easy or is it hard? Some people say hard, some say easy. तो प्रश्न ये है कि ये सरल है कि कठिन है? They say those who are serious, it's easy. Those who are not serious, it's hard. तो जिनकी भक्ति में निष्ठा है उनके लिए सरल है, जिनकी निष्ठा नहीं है उनके लिए कठिन. Just be serious. तो इसलिए निष्ठा लाइए, Practice that. अभ्यास करिए. Yeah, when you understand that this is for my ultimate benefit, then you can become serious. क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि यह हमारे लाभ के लिए है तो आप इसको निष्ठापूर्वक लेंगे. We go to university, you want a degree, we become serious, right? तो जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं, डिग्री प्राप्त करने जाते हैं, तो आप उसके लिए सीरियस रहते हैं. We're looking for a husband or a wife, we get serious. जब हम पति पत्नी की तलाश में रहते हैं तो भी हम बहुत ही सीरियस गंभीर रहते हैं. Serious about things in this world. तो जब हम इस जगत की चीजों के लिए इतने गंभीर हैं, But the ultimate benefit is Krishna consciousness, to be with Krishna, to be out of the material world, to attain the spiritual world. We should be serious, yeah. तो जो हमारा परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण के साथ रहना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा गंभीर रहना चाहिए. Not like, if I have some time, okay, Krishna, I got some time, I got 10 minutes. After 10 minutes, and I have to go back to do what I usually do. ऐसा No, नहीं, not like that. ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ 5-10 मिनट का समय ही होना चाहिए कि 10 मिनट के बाद कुछ और काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए. Serious, that's all. That's the difference. Serious, easy, not serious, not, it's difficult. तो गंभीर के लिए सरल और जो गंभीर नहीं है उनके लिए कठिन.
If you want some sweet rice, you just put, you cook it nicely with some milk, some sugar, some rice, and then you cool it off. And you have nice sweet rice. But if you cook it with milk, sugar, and rice, and then you put a little, chili in it, so that's not sweet rice anymore. That's something else. So don't put anything else in your Krishna consciousness. It's very easy. Mataji in the back, yes. Hare Krishna Guruji. I just wanted to know how to inculcate these values in our kids. How to teach them about Bhagavad Path, who is How Krishna. to teach? How to teach them about Bhagavad Path to our Krishna, to our child. How to inculcate these values into How our to child. encourage our family members and children? Yeah, I have a son who is 6 years old. So he asked me, Mama, we should worship to which god? Shivji, Krishnaji, Ganpatiji, who are they? So I want him to understand about the energy, not the idols. Well, it says the best Thank way to encourage children, young adults, is to bring them to the kirtans. That's all. अगर बच्चों को आकर्षित करना चाहती तो सबसे अच्छा है उन्हें आप कीर्तन में लाइए. They come to the kirtan, they have a nice experience. अगर वो कीर्तन में आएंगे तो उनका अनुभव अच्छा रहेगा. But Krishna's tu Bhagavan Swayam, ete chamsam kalom pumsam, Krishna's tu Bhagavan Swayam. So, Mahadev, Shiva, he is Vaishnava Yata Shambhu. He is a devotee of the Lord. But he plays the role of a Lord and a devotee. But he is actually worshipping Ram. Shiva worships Lord Ram. So Ram is the supreme and Shiva is a bhakta of Ram. He's a Ram bhakta. तो शिव जी जो हैं वो सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं. वो भगवान और भक्त दोनों का किरदार निभाते हैं, लेकिन दरअसल वो राम भगवान के भक्त हैं. राम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं. Brahma bole chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukhe Rama Rama Hare Hare. So Brahma, he worships Krishna, and Shiva, he worships Ram. तो ब्रह्मा जी हैं वो कृष्ण की उपासना करते हैं, शिव जी राम भगवान की उपासना करते हैं. But he's very powerful, Shiva. So you can take the blessings of Shiva. We can ask for blessings from Shiva, and he will help us in our worship of Krishna. आप शिव जी से आशीर्वाद ले सकती हैं, प्रार्थना कर सकती हैं, उससे वो आपको भगवान कृष्ण की आराधना करने में सहायता करेंगे. Well, when you bring the young people to the kirtans, then they have a nice experience. जब आप नए लोगों को, नवयुवकों को आप कीर्तन में आते हैं तो उनका अच्छा अनुभव होता है. Okay, thank you. Dhanyawad. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Chandramauli Swami Guru Maharaj ki jai. Srila Prabhupada की जय. Kirtan? Should we have kirtan? Yeah. Okay. Okay. Good. So everyone get up and dance. You can all dance.